ईरान इजराइल जंग के बीच में अमेरिका के कूदने से युद्ध लंबा खिंचने के आसार हैं। ईरान इजराइल की ये लड़ाई सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगी। इसकी आंच माल भाड़ा, तेल और गैस के दामों और आयात निर्यात पर पड़ सकती है, जिसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ेगा। बता दें कि ईरानी संसद ने जलमार्ग बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईरानी संसद द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दिए जाने के बाद क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। जंग के बीच तेल संकट हो सकता है। ईरान इजराइल जंग का जो असर है तेल कीमतों पर पड़ सकता है। और क्या कुछ कहा हरदीप सिंह पुरी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। Companies, the oil marketing companies have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. We are in touch with all possible actors in this, the supply routes, etc. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. Of course, we will be watching the unfolding situation, and the Honorable Prime Minister has already spoken with all the major leaders. He's had a long conversation with the President of Iran also, and calling for de-escalation. It is our hope, and all of us are expecting that the situation will result in calm and de-escalation rather than further escalation. But meanwhile, we continue to be prepared to meet the evolving situation.